Als ik Indiase vrienden vertel dat ik, en bijna de helft van mijn vrienden, nog steeds vrijgezel is, willen ze me niet geloven. Er komt in India een moment dat je ouders voor je op zoek gaan naar een levensgezel. Nog steeds zijn 9 op de 10 huwelijken gearrangeerd. Misschien is het ook wel te ver doorgeslagen bij ons in het Westen. Mensen zijn eindeloos op zoek naar een onrealistische combinatie van passie en stabiliteit. Ik in ieder geval. It just happened in 21 days. Okay. So you knew your wife When only they- 21 days Yes. before you got married. Yes. And how long are you It is married? our now? culture. And how long are you married now? Near about 1.5 years. So how is it going? It's good. Very good. My in-law families check everything. How is my behavior? How's family behavior? They check in 21 days. They check everything. Everything. What, your income or health? What are the boys I'm doing? What Yeah. is my daily routine? Yeah. They check. And your income, Everything. your health? Then they said that it is okay. Then it's okay. But could you imagine your parents doing arranged marriage for you? Yeah. I don't mind that because, to be honest with you, it's not that my parents would say, this is the girl you get married to and that's it. They actually ask for it. You know what, if you want to go ahead, if you know a girl that you want to get married to or not. Are you married? I'm not married. Like, So- we're single and he's the only person who's married. Ah, okay. The only lucky man or unlucky man. Sorry you look at it. Both ways though. And how old are you? I am 27. 27. And Not are you married. not married? I was hearing your interviews. You were not married yet. I'm not married. And at what age normally guys get married? In India, people from my community, people from my socio-economic background, they normally marry around 27, 28 only. Okay. So your parents are starting to worry already? Or? They are worried. Yeah? Yep. What do they say? They keep looking out for girls, but I keep saying no. Once you're ready for it, will it be arranged marriage or you're really looking I'm open for... to both. You're open to both. Open to both. That's changing very quickly, right? I mean... Many love marriages not so successful nowadays, and so many arranged marriages, they are supposedly more successful than the love marriages. It's probably because when you look at the Indian background, in a love marriage, the parents they take away all the responsibilities. Like if you get married, you have your love marriage. They'll say it's your responsibility, not mine. A love marriage means a marriage where you love a girl... You select your own girl. Right. Right. So then the parents they take away the responsibilities. They'll not be responsible for anything that happens bad in your marriage. Okay. While in an arranged marriage, the guy gets free. He is probably he's probably taking only half the responsibilities. Because the parents chose And in your India, partner. it's not basically like it's not a union of two souls. It's a union of two families, not just two souls. Are you married already? No, I'm doing my engineering studies, so I'm not married. Okay. It's not allowed in my studies period. You're not allowed? Yeah, I'm not allowed in my studies period. Means after my study only I will be able to marry. Why? Means if I'm standing on my foot only, means I'm earning some money, then only I can make my partner happy. Because cash is important in marriage. But what happens if you meet a nice girl, for instance, now, here on the boulevard? I will wait. Might be 4 and 5 years. Okay. So, and then in general, will your marriage be arranged? Yeah, of course. So my parents' choice. You don't know really the person you're marrying, right? Yeah. So, Well, that's depend on our culture. I'm an Indian. Whatever my parents will choose for me, that will be the best, and that will for me. but then how do they know what you prefer, what kind of woman you... Sometimes it does not matter. It doesn't matter. Sometimes it does not matter. Means if the parents find a good mate for us, she may be good. Okay. It means our parent will might only be think for better what for our us. parent find, it's good. Not maybe good, it is good. It's because your parents, Yeah, Yeah, because they because will always parents. think better for us. not because you. What you think? No, I will prefer my parents. That's it. Elke zondag zitten de huwelijksadvertenties bij de krant. Maar dat werkt ietsje anders dan in Nederland. Ten eerste
zijn de advertenties ingedeeld per kaste. Want je trouwt natuurlijk nooit buiten je eigen kasten. En ten tweede zijn de advertenties niet geplaatst door de mensen die gaan trouwen, maar door hun ouders. Seeking bride for our son. 28 jaar oud, MBA, working, etc. Seeking a generous boy for our daughter. En zo gaat het maar door. Rajput, Muslim Shia, Muslim Sunni, Brahmin, engineers, Hindu, Manglik, Marwaris, Vishkavarma, Agarwal, Bengali, Brahmin. Het is niet alleen per kaste, maar ook nog eens per gebied in India. Fascinerend. Even kijken. Er zit ergens nog een heel klein rubriekje. Kasten niet belangrijk. Er staat 1 advertentie. Je hebt een afspraak met de Love Commando's. Dat is een groep vrijwilligers die zich inzet voor mensen die uit liefde willen trouwen. Wat nog steeds bijzonder is in India en ook gevaarlijk. Ze zitten ergens in deze straat, maar gezien hun werk is het veiliger om mij niet te vertellen waar precies. En hij pikt mij zo op. En het is ook gevaarlijk voor hun. En daardoor filmen we nu een beetje in het geheim. So why is it better not to film outside? Sorry, nothing outside. Why is have that? security constraints for the couples and ourselves also. Because it's dangerous. Yeah, we are promoting love in India. It is a very dangerous thing. And it is one of the shelters, hidden shelters. Okay, okay. And you have to remain at such places, hidden places. But that's why I have been requested, please come inside, nobody outside. Absolutely. Let's come inside. Tell others also to come inside, please. This is one of the shelters. Okay. Let me introduce you. Yes? It is one of the couples helped by us. Now they are living their life on their own, but today they are here to meet us. Okay. The boy was dumped like he is dead by the family of the girl. But thank God, both are safe and sitting here. They tried to Kill him. They felt that yes, he is dead and he was dumped into a big hole. Anyway, he was dumped in night. His car was taken away, which is still not traceable. The police has not acted so far. When The did next- this happen? It is more than an year. कौन सी डेट को हुआ था? ये अपनी 13 मई 2011 13th May last year. He is Mr. Sonu Rangi, our commando coordinator, Yellow. and he escorted you. He is Mr. Rajesh. He is a chief coordinator of Delhi and NCR area. He is our expert commando Govindo. Okay. He led the Yellow. operation of rescuing a girl from some 14 feet high in Haryana. Now that girl and her boyfriend is happy. And here is Mr. Harsh Malhotra, our chief coordinator. हाँ, बताइए। बात क्या है कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ। जी जी। 5-6 साल से मेरा उससे मतलब प्यार है और लड़की भी मुझसे प्यार करती है। जी। जब सच्चा प्यार है, लेकिन अभी मतलब घर में हम लोग ये सब बात बताए। हाँ। तो मेरे घर वाले मेरे को मतलब कोई भी कंडीशन में बताने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। और लड़की अदर कास्ट है। हाँ। तो लड़की अपने घर वालों के प्रेमों में भी नहीं कर सकती है। अगर लड़की की जबरदस्ती शादी की जाती है तो आप हमें तुरंत बताइए, हम उस शादी को भी रुकवाते हैं और जो दबाव में उसकी शादी करा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। अभी तो सर अभी मैं करा सकता हूँ, आपको इंटरेस्ट है, आपको वक्त होता है, बस एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, मैंने होल्ड किया हुआ है। मैं कार्ड दूसरे नंबर से लगा रहा हूँ तुरंत आपको मैं। ठीक है, थैंक यू। This is actually the place where the phone calls come in? Yeah. And how often do you get phone calls? Around about 500 calls, 700, 1000 Per day. Per day? Yeah. Can you tell a little bit about the connection between arranged marriage and caste system? Because I think isn't this arranged marriage a way to promulgate the caste system? Is that maybe why they're afraid of these love Actually, marriages? what we feel, the people
want arranged marriage only to strengthen their caste system and to hold their properties. Our Supreme Court says that the only way to eradicate this evil of casteism is promotion of love marriages and love relationship. Everyone has got a constitutional right to have a marriage of his or her own choice. To love another person, actually. Yeah, to love another person. हेलो, हाँ बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? हाँ बेटा? हाँ रानी, आप राहुल से शादी करना चाहते हैं? हाँ जी, वो हम अपने वर्ष को लेके हम शादी करना चाहते हैं। तो अगर इसके लिए आपको इसके साथ रायपुर आना पड़े और हम आपकी शादी कराएं तो आप आ जाएंगे इसके साथ? हाँ, लेकिन मैं एक साल के बाद ही सब कुछ सोच पाऊंगी, अर्जेंटली मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, अर्जेंटी नहीं, आप आराम से सोचिए, आपके पास टाइम है, आप घबराइए मत। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, अगर आपको मारने की धमकी होती है या कोई आपको टॉर्चर करता है तो हम आपको उसके लिए प्रोटेक्शन दिलवाएंगे और हमारे कमांडोज आपके साथ रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको पुलिस से भी प्रोटेक्शन दिलवाई जाएगी। आप इस चीज़ से मत घबराइए। पेरेंट्स का कोई अधिकार नहीं कि आपको मारे पीटे या आपके साथ ज्यादती करे। आप निश्चिंत होकर रानी, आप इस राहुल सिंह के साथ शादी कर सकते हैं और कोई दिक्कत आएगी लाइफ में, हम बैठे हैं। आपको एक दूसरे में क्या अच्छा लगा? हमारा मतलब स्कूली टाइम से हम लोग प्यार करते थे आपसे, काफ़ी हमारे एक साथ से बहुत ज़्यादा टचिंग थी मतलब, और हमारे घर वालों को भी मतलब पता था, लेकिन वो लोग बात को नहीं समझ रहे थे हमारी। हमने जब कहा कि हम लोग शादी करना चाहते तो वो लोग राज़ी नहीं हो रहे थे, तो इसलिए हमें अपनी मर्ज़ी से भाग के शादी करनी पड़ी। हमारी अपनी सेंट्रो थी और हम अपना सेंट्रो ठीक करना चाहते थे, तो उन लोगों को पहले से प्लानिंग कर रखी थी उन लोगों ने कि हमारे को ऐसा करना था। तो उन्होंने हेल्प के लिए वो यानी लिफ्ट के बहाने गाड़ी रुकवाई और उन्होंने कहा जी हमारी मौत हो गई घर में और हमें वहाँ तक छोड़ दो। मैं वहीं जा रहा था तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी और बैठा लिया। मैंने 4 बंदे थे और फिर चलते गए तो एक व्यक्ति यानी कि उसको टॉयलेट लगी तो उसने बोला गाड़ी रोक लो, साइड में लगा दो। गाड़ी साइड में लगाई और फिर जो टॉयलेट उतरा करके वो मेरी ड्राइवर सीट पे आया और जो 3 बंदे पीछे बैठे थे उन्होंने रिवॉल्वर चाकू निकाला, सीधा मेरे को अटैक करके पीछे खींच लिया और रस्सी से बांध के अपना, और पता नहीं कहाँ 5-6 घंटे घुमाते रहे और यूपी जाके कहीं खाई में जाके फेंक दिया उन्होंने, मार के समझ गया। जब मुझे अपना होश आया तो मैंने अपने आप को बंधे हुए देखा रस्सियों से, फिर मैंने रस्सी अपनी दांतों से खोल खाल के फिर मैं खाई से बाहर आके फिर मैं हाईवे रोड पे आया। फिर किसी से लिफ्ट उसने दी, मुझे थाने तक पहुंचाया। फिर अपनी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने फिर सीधा मेरा सवेरे अपना घर भेज दिया था, मेडिकल करा के उन्होंने। मतलब वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को मतलब चैन से नहीं रहने देना चाहते वो लोग, तो वो ये सोच रहे कि एक दूसरे से या तो अलग हो जाए या तो दोनों ख़त्म हो जाए। तो वो तो चाहे कितना भी वो कर ले, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और ज़िंदगी भर रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हमको। Can you tell me who is hiding right now? Yeah. Now, there is a One Muslim. case? There is a Muslim couple from Uttar Pradesh which is in one of our shelters. The panchayat had announced a reward of 50,000 Indian rupees for on their head. They are in our, and they have got a beautiful baby now. They are hiding in our shelter. Because they were from a different caste? Yeah. You even have castes within Islam as well. Yeah. Yes. They were from a different caste, and then economic status. Both factors are there. And again, thirdly, they are from the same village. And the village council put money on their heads. Yeah. That is what I'm saying. Panchayat means the village council. Yeah. Because within the village you cannot. Yeah, you cannot marry. Their house has been snatched away. The entire family of the boy is away. Boy's father died of shock. And love is nature. It is natural between a boy and a girl, male and a female. If cutting a tree
is against the law of nature and there are huge punishments, then why shall anybody be allowed to object to the most natural thing on the earth, that is love? One should promote love and love marriages only, because then only India can be saved, humanity can be saved. Ik was in Gujarat, een drooggelegd gebied waar nergens drank te krijgen was. Ik raakte bevriend met een oogarts met een drankkast. Elke avond dronken we whisky en praten over de liefde. Hij kon zich niet voorstellen dat ik nog steeds vrijgezel was. Ik kon mij niet voorstellen dat ik zou worden uitgehuwelijkt. Hij vertelde over de huwelijksnacht, die natuurlijk nogal ongemakkelijk was. Ik lag met een vreemde in bed, vertelde hij. Het kostte een paar maanden voor ze aan elkaar gewend waren. Actually, that was the moment when it actually sunk in that we are getting married. And especially with the kirtan playing in the background and our family gathered in the Gurdwara. It felt really nice. Kirtan and all gives a lot of motivation, encouragement, that I think God will go for the right. And it sunk in and you realized it. Was it a happy feeling? Oh, it was a very nice feeling. Yeah. We have one difficult question. I also don't know the answer to it, so maybe you do. What do you consider love? I think it's more about companionship and being comfortable with each other and accepting each other and also trying to change for each other. Yeah. That's what love is. And for you? Yeah, definitely understanding and comfortable. That is the most important. So how did you meet anyway? So our parents meet first. So they decide that family meets. So then we met on 12th of June. But then the parents, how did they know about your parents? They are already from our grandparents. They know each other. Okay. Yeah, actually our grandfathers knew each other. So then our parents also kept meeting on several occasions. Okay. And then you know the concept of arranged marriages. They check the backgrounds, right? A little bit. Or, Yeah. What kind of... So your parents met you, right? Not me. Okay. They met each other. They met each other. Then we both met. Then they arranged a meeting for both of us. Okay. Then we met on 12th of June. So we spent half an hour and 45 minutes just talking about here and there. So how does it go? The first meeting must be really first exciting. meeting I think we are comfortable and we have a lot of similarities. Initially we were a bit awkward. Yeah. But then we got talking and there was so much in common. So the first meeting was nice, very memorable. Is that from the two of you? That's the engagement album. Okay. Yeah. That happened way back in July. That was in July? Yeah, 24th of July. So is there any special ritual happening then? That No, we just exchange rings. Oh, it's just what we do in the would do in the West as well. Okay. And dance a lot and eat food. Right. That's about it. And do you have also the feeling that it's not just the two of you concerned with the marriage, but it's your families as well? Yeah, definitely. The main thing is the families, they should be happy. So their concern is the most important. So after that, we also get along very well. Yeah. So we're happy for that. Because families are actually more important maybe even than individuals, right? It's family ties are so strong. Yeah, family is always the most important. So, but later we have to think about ourselves also, but then also we get along very well. So it's fine. And how does it feel now? You're a married couple. I don't think we are married yet. Not got that type of feeling yet. And are you already planning children or? No, not yet. And do you think about having a son or a daughter or all these things? No, we keep talking just generally, just for the fun of it. Yeah. But no plans yet. Okay. And would you prefer any? I prefer girl. Girl? Yeah. Really? Really? Why is that? Yeah, I don't know why.
In dit geval is de bruidsschat een Mercedes. Als de ouders van de bruid rijk zijn, maakt 1 dochter niet zoveel uit natuurlijk, zolang er maar een zoon op volgt. Via de zoon gaat de naam door en wordt de grond overgeërfd. Je zou denken dat rijkere en hoger opgeleide Indiërs een dochter minder erg vinden. Maar juist bij deze groep worden meer jongens dan meisjes geboren. Echo's waaruit blijkt of het een jongen of meisje wordt, zijn illegaal in India. En alleen zij hebben het geld om de dokter om te kopen. In India is er een tekort van 7 miljoen meisjes. Niemand zit te wachten op een dochter die je met een bruidsschat moet uithuwelijken. Voor arme gezinnen is een bruidsschat al gauw 5 keer een jaarinkomen. Zij nemen een hypotheek op een bruiloft, niet op een huis. Ze hebben geen geld voor een illegale echo en doden soms hun dochters na de geboorte. En als meisjes dat allemaal bespaard is gebleven, sterven daarna nog honderdduizenden door verwaarlozing. नमस्ते दीदी। एक मिनट हटो, आपका वजन करना है। दीदी आपके साथ आएंगे? वेट करके ना मेरा देख लो। ठीक है आ जाओ, फिर इसका पता चल जाएगा ना। आपका 40 अभी 44 कितनी है? 4 पकड़ो। 4 किलो वजन कम है उम्र के हिसाब से। जैसे 8 महीने की हो गई है ना, 8 महीने की तो होगी, पर ये हुई भी तो कम टाइम पे है ना। हाँ वही बता रही हूँ आपको। तो इसको बोलेंगे हम अंडरवेट, प्रायोरिटी में है, काफ़ी वजन कम है इसका। आप इसे ना ऊपर का आहार देना शुरू करो। ऊपर का आहार जैसे दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, या नारियल पानी, जूस है, कोई सूप बना रहे हो घर में सब्जियों का, टमाटर का, ये सब दो इसे। और देते हो इसे ऊपर का? वैसे नहीं, बस दूध ही पीती है, ऊपर का तो कुछ नहीं। और इसका वजन बढ़े भैया तो इसके लिए तो पिलाओगे इसे कि नहीं? नहीं खिलाते। हाँ खिलाते पिलाते रहो। इसका वजन ना काफ़ी कम है। एयर पोल्यूशन। आज राहुल सीधा सीधा आ जाओ। राहुल का वजन बढ़ गया 1 किलो। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। 4 बच्चे हैं। लड़की कितनी है आपकी? 2 लड़की है। आपका भी करना है? क्या बनाया आज बच्चों को? आपने क्या खिलाया? आपका 18 किलो वजन है। चावल सब्जी खिलाया। अच्छा। जैसे लड़का लड़की होते हैं घर में, तो जैसे हम यहाँ पे एक फैमिली में गए थे, लड़के का वेट 14 किलो था, 15 किलो। लड़की का वेट 14 किलो था। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था, तो उसका वेट में काफ़ी अंतर था। उसकी मम्मी से मैंने पूछा कि आप दोनों को सेम खाना खिलाते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम खिलाते हैं खाना सेम। लेकिन ऐसा नहीं था, लगता देखने से तो नहीं लगता था, क्योंकि 2 लड़कियां उनके घर और 2 लड़के हैं, और दोनों लड़कों का वजन सही जा रहा है। कि लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, कहते हैं कि लड़के बड़े होंगे तो काम करने जाएंगे, पैसा कमा कर लेकर आएंगे, फिर उनकी शादी करेंगे लड़कों की। ऐसा भी होता है। तभी फिर उनके मन में ये विचार है, तभी लड़के और लड़कियों में अंतर करते हैं। नमस्ते। ऐसे प्रीति बोला मेरे मुलाकात 15 किलो वजन है। गाड़ी के बहुत ही है। हाँ तबीयत खराब है। कहाँ गई? उसको बुला हम ले जाओ। आपके पास कितने बच्चे हैं? 4। 4? हाँ जी। लड़का नहीं है, लड़की है। लड़की? हाँ जी। हाँ जी। अल्ट्रासाउंड? हाँ जी।
जैसे हमें अगर लड़का हो सकता है तो हम रख सकते हैं, अगर लड़की होंगे तो नहीं रख सकेंगे। आप पढ़ना सकते हैं? नहीं जी। नहीं? हम पढ़े लिखे नहीं है बाजी। मैं भी पढ़ना नहीं सकता हूँ हिंदी। 100 रुपये लिया आपसे अल्ट्रासाउंड का, लेकिन ये नहीं बताया आपको कि आपका बच्चा ठीक है? नहीं, वो सब कुछ नहीं। कुछ उन्होंने आपको क्या बताया अल्ट्रासाउंड के बाद? उसने बोला नॉर्मल लिखा हुआ था। नाराज होते हैं जी। क्यों? क्योंकि लड़कियां हैं आपकी, लड़कियां सारे हैं, लड़का है नहीं आपको। वो सिर्फ अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, कभी अपना कमाएंगे तो दारू शराब गया भांग अपना पी के ऐश करते हैं। हमारे ऊपर वो इतना ध्यान नहीं देते कि हमारी पत्नी, क्योंकि बोलता है कि आपको किस लिए मानो, सिर्फ लड़कियों है इस कर को। घर में भी सब सास ससुर दिवरानी जेठानी यहाँ भी ऐसे बोलते हैं। इस कर को हम गाँव से घर से यहाँ पे रहते हैं कि चलो न कचाड़ी, किसी को बात ना सुनो, किसी को अच्छा गालियाँ ना सुने। हम इस कर को यहाँ पे आ जाते हैं, अपना कमा खा के किसी तरह सोचे कि बाल बच्चे जब बड़ फूल जाएंगे तो अपना ज़िंदगी सोच लेंगे खुद की। अब गरीब आदमी है, अब लड़की चर्चा हमारे ऊपर, मैं पढ़ा लिखा नहीं सकती हूँ, पेट नहीं चल रहा, पढ़ाऊँ लिखाऊँ कैसे, यही चक्कर। और कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ। साथ देने के लिए 2 पैसे ना कपड़े, हर कुछ के लिए हम सोचते हैं यहाँ पे। तो क्या करूँ, किसको सुनाऊँ? घर की बात अपने सीने में अपना छुपा के रख के बस करती हूँ। Je zou denken dat de vrouw een man voor het uitkiezen heeft door het overschot aan mannen. Maar dat is niet zo. Vooral in dorpen worden vrouwen nog wel eens uitgehuwelijkt aan mannen die van drank houden of wel eens een klap uitdelen. Maar omdat scheiding taboe is in India, blijven die vrouwen toch kosten wat kost bij hun man. Dat geldt ook voor het meisje met wie ik door deze buurt liep, kwam ik achter. Ze had een dochtertje gekregen en daar was haar man niet blij mee. इसको ससुराल मतलब काफी तंग करते थे, परेशान करते थे, दहेज मांगते अलग से। और दहेज क्या था? दहेज मतलब कि जो कमरा बना है तो कहता वो हमको नाम कर दो, नहीं तो 3 लाख रुपया और दे दो तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और जो उस टाइम मांगे थे शादी के टाइम में, तो जो मांगे थे हम सब दिए थे, कोई चीज़ की कमी नहीं किए थे। और तब अब लड़की हो गया, क्या करेंगे? हमारा बेटी हम तो अपने पास रखेंगे। 2-3 साल तक तो ठीक रहा। बेटी जब मेरी हुई ना, उसके बाद से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रॉब्लम तो बाद में हुई है, जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई ना, उसके बाद प्रॉब्लम हुई है। जब 1 साल की डिलीवरी यहाँ पर हुई ना मेरी चंडीगढ़ में, डिलीवरी होने के 1 साल के बाद मैं घर वहाँ गई अपने ससुराल में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हुई। दोपहर में मारा था, उसके बाद फिर रात में भी जब घर में Your husband? यस सर। तो फिर रात में भी रात में करीब 11 बजे मेरे बाल पकड़ के मारा और कहने बाल पकड़ के मारा और कहने लगे कि चल तेरे को छोड़ के आता हूँ। मेरी बेटी को भी बाहर निकाल दिया घर से, बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया, कहते कि चल छोड़ कर आता हूँ स्टेशन पर। अकेला थी? यस सर, अकेले थे। फिर मेरी सास आई, सास ने कहा कि रहने तो मत मारो, अभी रात है कहाँ जाएगी। तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं अभी इसको छोड़ के आऊँगा स्टेशन पे। मुझे बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया घर से, कमरे से 11:30 बजे रात में। मम्मी को फ़ोन करके बुलाया, फिर मम्मी और आए। मम्मी अप्रैल में आए, तो फिर मम्मी पापा से बहुत झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो बात नहीं करना। ऐसे तो बात देते थे। अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब बेटी के अभी तो होगा नहीं, दूसरा शादी तो होगा नहीं। अब उसको किस्मत में जो लिखा है वही होगा।
Dat alles om het huwelijk draait, heeft ook zijn keerzijde. Als je gescheiden bent, is het als vrouw bijna onmogelijk om opnieuw te trouwen. En ook voor een weduwe is het leven niet makkelijk. De familie moet vaak niets meer van ze weten. Ze moeten hun eten maar bij elkaar bedelen. In Varanasi kwam ik een weduwe tegen van 25. Haar leven was eigenlijk al voorbij. Why more boys are being born than girls? Why is that? One thing is basically historically, if you take Punjab, this kind of problem is existing not from just 1 decade before or 2 decades. It's a historical problem. Punjab being a gateway to India, they used to have a war, looting, shooting, taking women away, kidnapping them, this thing. Maybe historically it may have got started because this women is a very honor to a family. So that might have forced them not to have more women. Second, because almost the invader coming from this, they want to have more male. One may be this. Then in the culture also, you find more preference of boys because boys are supposed to do the last ritual at the time of death. Girls are not supposed to lit the fire. The boy who do the last thing. The women are supposed to, girls are supposed to marry and go to their in-laws house. And it's the boy who will also basically do. This is a basically patriarchal value. These are all patriarchal values which have come from the ages and ages. So basically the male is the head, female is the second. Then in Indian family, when the daughter-in-law becomes mother-in-law, so she starts the same way as her mother-in-law has treated her. So basically, if you see the institution of mother-in-law, this is again a kind of patriarchal outsourcing of some power to her, which she dictates and uses against her daughter-in-law, thing like that. Door het tekort aan meisjes wordt de situatie voor vrouwen alleen maar moeilijker. Op grote schaal worden vrouwen geïmporteerd uit armere gebieden naar plekken met een groot tekort aan vrouwen, zoals het platteland van Punjab. Ver van hun familie, soms maar 14 jaar oud, worden ze vaak slecht behandeld en soms gedeeld met de broers van de bruidegom. Er zijn zelfs ouders die hun dochter laten ombouwen tot een zoon, wat meestal niet lukt. In elk dorp vind je wel een legertje mannen dat geen vrouw kan vinden. What is in the little bottles? These are all medicines. All medicines, okay. Yeah, we have for every conceivable disease. Okay. Shall I carry something as well? No, thanks so much. After Papa ji. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? So you know these women already for a long time, I guess? Yeah. Like friends? Okay. ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਲਵੋਕਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਆ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਤੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਰਲ ਕੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾ ਲਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 years back, this village had 25 males and 3 daughters only born. And this year, they are having 36 girls born and 28 males. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਹਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਦਾਦੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਤਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿਛਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਾਡੇ ਫਨਾਹ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। We were holding camps earlier also, medical camps like you saw today. So once what happened was we were about to enter a village and we heard some shrieks coming from some distance, and when we went there we saw dogs were tearing apart something. So we thought it is some maybe some animals. The shrieks were so horrifying that we wanted to stop it. So the moment we were nearing that place, the dogs ran away, and while they were running away, we saw one of the dogs was in his mouth, we saw a broken hand. And the other dog was taking a leg along with. A human hand and leg. Yeah, human hand. Of a child, of a very small arm, a very small leg. Okay. And the moment we reached that place, then we saw the intestines of that newborn child were torn apart, and one of the hand, as I told you, was also torn. One of the leg was also torn. Part of the face was also destroyed, and that was a newborn girl child. Okay. And it was so shocking for us. We actually never knew at that time that child was dumped there. We thought the dogs have actually brought this child from somebody's house. We never knew that this thing is really existing, that somebody can throw his own son or daughter. So we went into the village and we asked them whose daughter was it whom that dogs have torn apart. Yeah. And at that place we were told that this is not something really horrifying. You just go and attend the camp. And that was really shocking for us. That behavior was shocking for us. That why did they say like that? So we really wanted to inquire whose child was it. So then we were told that that was the fourth child of Fourth daughter Okay. in the family. In the family. And the husband had threatened that if it was a girl child, he will throw away the wife also along with the rest of the 3 girls also, because he can't give that much dowry. Okay. So that means he was blaming his wife for that. And that is what we did today. We were teaching them this is not the female who should be blamed. It is the responsibility of the male, whether it will be a female or male. Is that your daughter? We actually really asked for a daughter. We wanted a daughter. We wanted a daughter. We wanted a daughter, the first daughter, and this house was built before she came, and we have named this house after her. And we said to everybody that she'll be the only child in our house, and that was by chance conceptive failure when he came. We don't know how this small accident. But you're happy with it, and you. Yeah, we're definitely happy. Whatever the God has given us, we are happy. When people used to do infanticide, it was a social accepted fact. It had got social acceptance. They will put that 1 day, 2 day baby, after killing her, in a basket. They will put the basket on their head
and being accompanied by 10, 50, 20 women of this village, and used to go to cremate her, and they used to sing, गुड़ खाएं पूनी कत्ती आप ना आए बीरे नू कत्ती. Eat jaggery, spin the cotton, you don't come, you send your brother. While taking this dead body or cremating, all the women used to have this song. Earlier the midwife, the family people used to kill the girl, either just laying her on a bare floor, or give them some kind of poisonous thing, or just they will put up the fan, AC, the girl of 1 hour, 2 hour, 3 hour. That was basically infanticide. Maybe in that way this midwife or family people are involved. But after this, now after this emergence of ultrasound, now more and more things are being done by the white apron kind of people. It may be nurse, it may be A&M, it may be doctor. Because that gives them earlier there used to be some kind of a guilt feeling. Arme gezinnen hebben helemaal geen geld voor zo'n echo. Dus die moeten maar wachten wat voor kind eruit komt. En als het een meisje is, dan worden die vaak gedumpt op vuilnisstortplaatsen of worden in een trein achtergelaten. En een aantal van die kinderen heeft geluk. Die wordt dan gevonden en naar speciale plekken gebracht. Weeshuizen voor gevonden meisjes. Dit is er eentje van. En we gaan even binnenkijken. So, all of them are girls? All of them are girls? Yes. And where do they find them? It's our first. ये एक बच्चों का खास कमरा है, यहीं पे रहते हैं, प्रॉपर रूम. See this, see here. Little kids. Is this the youngest? 3 months. 3 months. Yes. So where was she found? Where did they find her? In baby cradle. In a baby cradle. Okay. So what is happening here? When a little baby comes, they throw in people. You can talk in Punjabi, Hindi, it's no problem. Okay. मैं थोड़ा हिंदी बोलता हूँ. अच्छा. ठीक है. इसलिए ठीक है. बाहर के लोग जो आते हैं ना, वो बच्चे को यहाँ पे डाल देते हैं. इसके नीचे इलेक्ट्रिक वाली घंटी लगी हुई बिजली की. बिजली की घंटी वो बजती है, तो हमें पता चल जाता है. हम आते हैं तो इसको उससे पहले उसको उठा लेते हैं, उठाकर अंदर ले जाते हैं बच्चे को यहाँ से. अंदर ले जाकर फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. Go inside? She takes care all the children. Okay, let's go inside. Yes. It's just one arm. After some time, operation in Delhi. When she grew up, 15, 16 years old. Yeah. Yes. Doctor says us. Yes. Okay. And how many children are in the house? 16. When is their birthday? 24 April. 24 April? Yes. All of them? Yes. We are equal. We take birth, celebrate on 24th April. Okay. Just one birthday a year? Yes, only one. So, but then it's a big day. Big cakes in 2 parts. Okay. 15 kilograms. 15 kilograms of cake. Like 25, 25. Total 50. It's a big birthday. Yes. Hello. ये भी बेटी जड़ी है ना, ये भी बेबी ग्रेड ची आई. You also? मैं सीनियर हूँ. ये नंबर 1. बड़ी है सब. And you?
ये है, मैं इनकी सेवादार हूँ। Okay. इनकी सेवा करते सेवा हैं। करते हैं। Yeah. हाँ। But Service. you were the first baby she found. And where were you found? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आई हूँ। हाँ. कोई माता पिता का नहीं पता मुझे, कौन माता पिता कौन नहीं है। बस मैंने यहाँ का आकर ही होश संभाली है। Okay. मुझे इतना पता है कि मैंने आप यहाँ आकर, यही मेरा घर है, यही मेरे सारे बहन भाई हैं। कर बेटे, करो, छत्तीसगढ़ करो। And at some point, do they get adopted or they stay in the home? Not allowed. Not allowed. Adoption. Yes. So not many girls are given away for adoption. Why is that? ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬॉय ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। बॉय दे देंगे हैं, बॉयज। लड़कियां नहीं, गर्ल्स नहीं, नॉट अलाउड फॉर अडॉप्शंस। सारे अनपढ़ नहीं है, सभी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे स्कूल में, हाई एजुकेशन ले रहे हैं। ये पढ़ रही है मंसूरी में। You were in school in Missouri? What was the name of the school? Convent of Jesus and Mary Waverly. Okay, so that's why you learned the perfect English. Okay, that's good. Pure. So what do you want to do? How do you see your future? What do you want to become later? I want to become a doctor. A doctor? Yeah. And do you think you will get married or you can find a husband later? Yeah. Yeah. How old are you? 11. 11. You speak really good English. Really. Thank you. Absolutely. ये सभी दशमेश स्कूल में पढ़ते हैं। MGM. And then do you know who your parents are? तेरे पेरेंट्स कड़े हैं? I don't know. You don't know? Do you know where you were found? No. I just came here. ये इसका अपना घर है पक्का। My daughters, my lovely daughters. De directrice was zelf de vondeling gelegd in een tempel. Een priester had haar opgevoed. Nog steeds veegt ze elke dag, voordat ze naar haar werk gaat, de tempel schoon als dank. Zelf heeft ze nooit een man kunnen vinden. In al die jaren zijn er 17 van de meisjes van het weeshuis getrouwd. Veel te weinig natuurlijk. Het gaat nu al zo goed met India. Het land groeit zo snel. Moet je je voorstellen waar India toe in staat is als al die meisjes zich niet meer ongewenst voelen. हर पाया हर